हाँ, तो ये दिस मस्ट बी योर फर्स्ट क्लास, हाँ, फॉर द कंटेक्स्ट बेस्ड कंटेंट। पहली क्लास है ना? सर एक रिलीजन के ऊपर हुई थी, उसके बाद में ये अच्छा, पहली। रिलीजन के बाद, हाँ, एंथ्रोपोलॉजी के लिए ये पहली क्लास है। सो अच्छा, रिलीजन का सेकंड कंप्लीट हुआ आपका? नहीं हुआ? दो क्लास हुई है ना? यस सर। पहली में ठीक है, समझ गया। दोनों, वो रिलीजन तो आपका वर्ल्ड रिलीजन कंप्लीट कर दिया था। अब हम जो डिस्कस करेंगे आज, एक कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी। तो खुशी और अस्तित्व बताओ, क्या आपके हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी क्या है? सर जो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी होती है सोसाइटी की, ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर और ह्यूमन कैसे डेवलप हुए उसकी। सोसाइटी की या मैनकाइंड की? सर मैं मैनकाइंड की। बताऊंगा हाँ, ना। बोलो बोलो बोलो। सर इसकी बेसिक डेफिनेशन अगर बताई जाए, समझी जाए, तो वो ये होती है कि ये एक स्टडी होती है जो बेसिकली ह्यूमन बीइंग, उनके डेवलपमेंट, उनका पैदाव कहाँ से हुआ, उनके कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ, उनका रहन सहन और उनके पास ह्यूमन स्पीशीज, दोनों को कंपेयर करते हुए हम एंथ्रोपोलॉजी के उस पर पहुंचते हैं। हम्म तो बेसिकली ये स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड स्टडी है। कोई, अब वो इवोल्यूशन किसी भी चीज का हो सकता है, उसको एंथ्रोपोलॉजी हम में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ, ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी हो सकती है, अदर देन बिजनेस स्टडीज एंड साइंटिफिक स्टडीज। ठीक है। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई डिजीज क्यों स्प्रेड हुई या कैसे इवोल्व हुई, वो भी एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है। बट इन मोर जनरल सेंस, इट्स द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, है ना? इंसान के एवोल्यूशन की स्टडी है, स्पेशली द एवोल्यूशन रिलेटेड टू द ह्यूमंस। सो और ह्यूमंस में भी स्पेशली इंडिविजुअल के कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट दिस इज द ब्रीफ कंटेंट रिलेटेड टू द एंथ्रोपोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसमें से कुछ एक चीजों को हम समझेंगे। दो इन एंथ्रोपोलॉजी इन इटसेल्फ इज ए सब्जेक्ट और इन ए डिसिप्लिन, तो उसमें तो बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है, बट वी विल बी ट्राइंग टू मेक few of the important aspects which are going to be helpful for uh, for the point of view of examination, for the point of view of understanding. Or the purpose is not to भाई हम इसमें बहुत ज्यादा स्कॉलरली या फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, या नहीं उस वो इंटेंशन भी है। हमारा इंटेंशन है कि हम समझ लें कि एक्चुअल में एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें आई, किस किस तरह से आई, और उनका जो एक ये डिसिप्लिन कैसे इवॉल्व हुआ। अच्छा, दूसरी एक और भी बात आती है कि एंथ्रोपोलॉजी जो एक सेपरेट डिसिप्लिन बना, ये कितना पुराना है ना? जैसे सोशोलॉजी एक और सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, सोशोलॉजी, तो कुछ एक डिफरेंस होगा सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में, है ना? वो भी थोड़ा सा प्रिसाइजली हम समझ लेंगे। सोशोलॉजी में भी तो सोसाइटी की स्टडी होती है। सर उसमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स की स्टडी होती है, सोसाइटी एज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। मतलब वहां पर ग्रुप की स्टडी है, यहाँ पर इंडिविजुअल इवेंट्स और इंडिविजुअल स्पेसिफिक ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी है। आप चाहे वो स्पेसिफिक डिजीज हो, चाहे वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कल्चर हो, है ना, उसकी स्टडी है। ठीक है, तो वो सोशोलॉजी वो सोसाइटी की है, ग्रुप की है। हाँ, ये डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं। मुझे एक मिनट टाइम दीजिए, तब हो गया है। So in part one, and I would like to extend my gratitude to the writers and the authors of this particular content, that is Robert Welch। ये उनका लिखा हुआ कंटेंट है।
I honor him to provide such a very good um, text or the composition or the research or the understanding. So here the in part 1 there is an anthropological perspective, that is anthropological perspective. Anthropology asking question about humanity कि भाई कैसे ह्यूमैनिटी का जो इवोल्यूशन है और वो कैसे प्रोपेगेट कर रही है. उसके बाद कल्चर गिविंग मीनिंग टू ह्यूमन लाइफ. In itself, this particular statement giving meaning to human life is largely sufficient to define the culture, though there are several other aspects when we will be digging deep to understand the culture. Thereafter, human biocultural evolution, emergence of biocultural animal. Thereafter, cross-cultural interaction, understanding culture and globalization. Thereafter, in part 2, there is a becoming human, living primates, comparing monkeys, apes, and humans, ancestral human, understanding the human family tree, human biodiversity today, understanding our differences and similarities, the body, biocultural perspective of health and illness. Thereafter, part 3, humans and their material worlds, and materiality, that is constructing social relationship and meanings with things, that is materiality. Thereafter, early agriculture and Neolithic revolution, modifying the environment to satisfy human demands. Thereafter, rise and decline of cities and state, understanding social complexity in prehistory. And thereafter comes the part 4, that is the human social relation and their meaning. Linguistic anthropology, related language and culture, that is again the linguistic anthropology. And archaeology is one aspect which we somewhere incorporate in understanding the anthropological or the evolutionary aspect. Thereafter, economics, working, selling and buying, sustainability, environment and food waste, power, politics and social control, kinship and gender, sex, power and control of man and women, religion, rituals and belief, and thereafter anthropology and future of human diversity. This is the comparatively very logical and reasonable gamut of anthropology. Studying all these things will make our discussion rather detailed and complex also. So we will be trying to discuss all of the aspects very laconically. बहुत छोटे में हम उसको discuss करेंगे. Thereafter, understanding ourselves. This particular content has been given by Konrad Kotak. I'm thankful to this. Thereafter, understanding ourselves, that is the global climate change. This is the part of anthropology. Appreciating diversity, plight of climate, refugee, environmental anthropology, global assaults on local autonomy, deforestation, risk perception, interethnic contact, religious change, cultural imperialism, making and remaking culture, indigenous popular culture, global system of images and global culture of consumption, people in motion, appreciating anthropology, giving up the American dream. This is the one story or episode or instance related to understanding the anthropology. Indigenous people, identity of indigenous politics, and continuance of diversity. These are few other topics that somewhere provides a scope to understand things under the cover of anthropology. So I'm going to share another document meanwhile. This is the outline. So we will try to understand what the human anthropology and the human beings, the subject of anthropology, are one of the world's most adaptable animals. It is considered. So all humans share basic biological and behavioral characteristics
that make extraordinary adaptability possible. The statement in itself is sufficient कि हम सबके अंदर कुछ एक ऐसे बेसिक सारे जो ह्यूमंस हैं वो शेयर करते हैं बेसिक बायोलॉजिकल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, और जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडेप्टेबिलिटी ह्यूमंस के अंदर एग्जिस्ट करती है. दिस इज द ओनली क्रीचर दिस इज कंसिडर्ड व्हिच इज on the earth or even in the universe which is considered to be most adaptable. Adaptability means adjusting to certain things. How are you, Harsa? I'm good, sir. सेंटर आओ कभी. हाँ जी सर, मतलब मुझे आज जाना था लेकिन यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही थी, तो मैं नेक्स्ट संडे आई विल बी कमिंग. रेगुलर आना शुरू करो सेंटर, ठीक है? हाँ जी. यस. हाँ. So adaptability means हर्षा अस्तित्व. हाँ जी सर. Adaptability का मतलब बताइए, क्या समझते हो adaptability से? इन स्टेटमेंट है very common term which we use in our daily or in common कि जो भी मतलब जैसा भी आपका एनवायरनमेंट या जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, you just adapt yourself in that way. Instead of being like complaining or something, you just adapt. Adjustment. Adaptability means adjustment with respect to the changes happening in environment or in our surrounding. Adaptability means adjustment. तो उस environment का habitual हो जाना. हाँ, environment से adjust करना है ना. Adjustment जैसे example दो जरा. अगर मान लीजिए एक लोकेशन है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वहां पे बाढ़ बहुत आती है, तो एडजस्टमेंट कैसे होगा? कैसे हो सकता? स्पेसिफिक टाइप के घर बना के. स्पेसिफिक टाइप के घर बना के. दूसरे तरह का एडजस्टमेंट क्या हो सकता है? लोग वो जगह छोड़ दें. तीसरे तरह का एडजस्टमेंट क्या हो सकता है? लोग जो कॉज ऑफ फ्लड है, बाढ़ जो आती है, उस कॉज के लिए उसको रोकने के लिए, उसको लिमिट करने के लिए कुछ एक काम करें, जैसे बांध बना दें. Is it do you consider this an adjustment or not? Or adjustment, see, adjustment has two end of continuum. We can understand that. एक तरफ जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, keeping our abilities or making our abilities tolerant to the given situations, and when we work on to upgrade our abilities to change the environment, that is again adaptability. Here we are putting our efforts, ठीक है, तो वो एक adaptability. Yet as the species we exhibit tremendous variation in environmental adaptation, physical appearance, language, belief and social organization. Now these are the tremendous variations in environment adaptations. बहुत सारे variations है, physical appearance है, language है, beliefs and social organization. ये बहुत हद तक ये बहुत changes देखने को मिलते हैं across geographical location, across cultures. Early generations of people had myriad explanations of this variation. Myriad means meanwhile we will be keep on discussing few of the words coming in between. और ठीक है ना, बीच में जो आते रहेंगे दो words के बीच में ही, वो you please keep on writing. myriad means many, several. Okay. Earlier generation, people had myriad explanations of this variation. They often imposed value judgment on human difference, usually with their own way of living deemed the best. Sometimes the resulting cultural misunderstandings created hostility and conflict. Most of the time, however, people have found ways to get along. Trade and alliances, for example, made cooperation more desirable. In later case, the practical understanding of human variations become essential. So this passage, see, we all are going to face similar kind of text somewhere in our reading comprehension.
and that text may be carrying the gist or the extract or extracts out of these kind of compositions. I'm going to provide this document that will be of very lesser number in terms of pages. तो उसको आप पढ़ लीजिएगा. Though the content is very huge if I keep this content as it is. So again, it's a very interesting and very will help us in the process of erudition. So तो क्या बोला कि जो पुरानी जनरेशन के लोग थे उनके पास बहुत तरह के वेरिएशंस के लिए एक्सप्लेनेशंस थे. उन्होंने वैल्यू जजमेंट भी जो है वो ह्यूमन डिफरेंसेस पर लगाए थे कि कोई पर्टिकुलर रेस को ये बोला जाता था कि ये रेस ज्यादा अच्छी है या ये रेस कम अच्छी है या ये ह्यूमन स्पीसीज ज्यादा अडेप्टेबल है, ह्यूमन स्पीसीज ज्यादा कम अडेप्टेबल है, ये ह्यूमन स्पीसीज मतलब अलग अलग जो डिफरेंसेस थे, ह्यूमन डिफरेंसेस थे, उनके ऊपर उनके अपने वैल्यू जजमेंट थे. यूजुअली विद देयर ओन वे ऑफ लिविंग डीम्ड बेस्ट, जिस तरह से उन्हें लगता था कि अच्छी तरह से जिया जा सकता है. समटाइम्स द रिजल्टिंग कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड हॉस्टिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट. और इसकी वजह से कई इन कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हॉस्टिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो जाता था. ठीक है. It may be a kind of you can say a state of superiority or inferiority aspect or complex basically. Okay, sometimes resulting cultural misunderstanding. So most of the time our people found ways to get along. ज्यादातर टाइम लोग जो है ना वो एक दूसरे के साथ रहना सीख गए और सीख जाते थे. ट्रेड एंड अलायंसेस फॉर एग्जांपल मेड कोऑपरेशन मोर डिजायरेबल. जब व्यापार शुरू हुआ तो उसके बाद जो कोऑपरेशन है वो ज्यादा डिजायरेबल हो गया कि भाई अगर एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी ये काम चल पाएगा. दैट इज लिव एंड लेट लिव. जियोर्जिनो वाली पॉलिसी वो इवॉल्व हुई और समझ वो डेवलप हुई. इन लेटर केस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन वेरिएशन बिकेम एसेंशियल. When cooperation came into existence, then the understanding of variation became essential. Some of the history's great explorers, philosophers, and historians took first steps to understanding culture. For example, the Venetian explorer Marco Polo, the Chinese philosopher Confucius, and the Greek historian Herodotus. इन सब लोगों ने समझने की कोशिश करी. जो आपने सुना होगा, मार्को पोलो का नाम सुना है? यस सर. कन्फ्यूशियस का नाम भी सुना ही होगा? यस सर. हेरोडोटस का नाम कंपैरेटिवली नहीं सुना होगा. तो ये ग्रीक हिस्टोरियंस थे जिन्होंने कल्चरल अंडरस्टैंडिंग उसकी तरफ अपना एक कदम बढ़ाया. एंड these historical figures were pioneer in studying the human variation. Pioneer means सर जो आगे आके वो लेता है. Those who initiate, those who start. No? These historical figures were pioneers in the study of human variation. They were not anthropologists, though they were not anthropologists. The discipline of anthropology did not emerge until 19th century. 19th century तक भी anthropology discipline evolve नहीं हुआ था. Especially this chapter focuses on what is anthropology, how it is relevant in today's world. To address the focal question, the chapter organized around the following problems. पहले तो anthropology शुरू कैसे हुई? What are 4 subfields of the anthropology, and what do they share in common? How do anthropologists know what they know? Anthropologists को कैसे पता चलता है कि जो चीज है वो मतलब कैसे उन्हें जानकारी इकट्ठी करते हैं वो? How do anthropologists know what they know? जो वो जानते हैं वो कैसे जानते हैं? How anthropologists put to work in the world? What ethical issues does anthropology raise? कौन से ethical issues anthropology raise करती है? Anthropology offers a powerful framework for posing questions about humanity and grasping complexity of human experience. It also provides important knowledge to help address many social problems. So if we talk about the social problems, then it's also have some anthropological or evolutionary aspect, that is the genesis. तो किसी भी चीज की शुरुआत की और उसके evolution की और propagation की जो study होती है, it may be the evolution of
biological evolution, it may be the evolution of any particular thought, it may be the evolution of any particular product, it may be the evolution of any particular process, or any such thing. It is in general considered to be the can be studied in the anthropology. Like अगर कोई क्वेश्चन आप एक ऐसा फंडामेंटल क्वेश्चन जो किसी एक पर्टिकुलर जेनेसिस, किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट या फिनोमेना के जेनेसिस से हो सकता है, दैट इज द इन्वेस्टिगेशन अंडर द कवर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजी covers that. So how did it begin? During 19th century, anthropology emerged an academic discipline. पहले academic discipline बना, devoted to observation and analysis of human variation. Human variations का के observation and analysis. And variation may be of different kind. It may be the variation in terms of evolution with respect to the space or the place, कि किस जगह पर किस तरह का एवोल्यूशन हुआ, प्राइमेट्स किस किस तरह के अलग अलग जगह पर किस किस तरह के थे, वो उस तरह का एवोल्यूशन, कल्चर अलग अलग जगह पर किस तरह से क्यों इवॉल्व हुई, जो बिलीफ सिस्टम था वो इस तरह से क्यों इवॉल्व हुआ, कोई पर्टिकुलर प्लेस किस लिए ज्यादा डेवलप हो गया, किसी लिए कम डेवलप रहा. देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आर इन जनरल वर द पार्ट ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन. Building on natural science developed during the Enlightenment age or the age of reason in 1700. Scholars begin to apply similar methods of understanding human cultural variation in 1800. 18वीं शताब्दी के आसपास human cultural variations का भी स्टडी स्टार्ट हो गया. उससे पहले नेचुरल साइंस का डेवलपमेंट जो है, एनलाइटनमेंट जिसे एज ऑफ रीजन बोला जाता है. एज ऑफ रीजन मतलब एक साइंटिफिक इवोल्यूशन, साइंस का जो इन्वॉल्वमेंट था और इंटरवेंशन था वो स्टार्ट हो गया था. रीजन करना कि अगर मान लीजिए दिन और रात है तो किस तरह से है, अगर अर्थ का रिवॉल्यूशन है तो इसका क्या इम्पैक्ट है, एंड सर्टेन अदर जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल फिनोमेना, साइंटिफिक फिनोमेना की गर्मी और जाड़े को लेकर के जो टेम्परेचर का डिफरेंस है. देयर मे बी myriads of such developments. The three key forces shaped the foundation of profession of philosophy in 1850. Disruptions caused by industrialization in Europe and America, the rise of theories of evolution, spread of European colonialism. These are the important aspects, three key forces that shaped the foundation of professional anthropology. Then they have become their anthropology stabbed in different variant that it founded itself in the professional sense. Earlier it was. So disruption caused by industrialization in Europe and America. Europe और अमेरिका में industrialization की वजह से disruption create हुआ. Rise of theories of evolution, वो कैसे evolve हुई चीजें, whatsoever it may be, उनकी वो theories evolve हुई. Spread of European colonialism, you all know the colonialism, and there is a list of terminology and glossary. I'm going to share that with you. Is it visible to you? No, sir. The screen is frozen. सर दिख रहा है. The glossary and terminology is visible. No, sir. Is it visible to everyone else? Now it is visible. Yeah, Yes, yeah, sir. it's visible now. Now it is. This is the glossary और terminology. और ये मैंने आपको जब आपको रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ाया था तब भी मैंने वहाँ की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पढ़ाई होगी. ठीक है, ये अब ये टर्मिनोलॉजी है, ये स्पेशली स्पेसिफिक टू द एंथ्रोपोलॉजी. There is a very long list. You will be finding a lot of common terms where we will be finding a very specific explanation against that term, like anthropology, the study of human beings, their biology, their prehistory and the histories, and their changing languages, culture and social institutions. This is what the definition of anthropology. If we want to know about the arboreal, this is the common term that living in the trees earlier and in the prehistorical time or earlier than that. अगर हम स्टोन एज और उससे और पहले की बात करें तो इन जनरल जो है प्राइमेट्स हुआ करते थे और ज्यादातर वो पेड़ों पर रहा करते थे. सो द लिविंग इन द ट्री इज नोन एज आर्बोरियल. सो
archaeology, assemblies, a group or collection of objects found together at a site in excavation is called assemblies, and this particular term can be used anywhere in our day-to-day life. Thereafter, band, a small nomadic and self-sufficient group of anywhere 15 to 25 to 150 individuals with face-to-face social relationships, usually egalitarian, is called band. है ना, हम बैंड टर्म बड़ा कॉमनली यूज कर लेते हैं, जैसे कि म्यूजिक के लिए या किसी कंसर्ट के लिए कोई लोगों के बैंड होते हैं. इनफैक्ट बैंड का जो एक्सप्लेनेशन एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, दैट विल गिव्स अस द जेनेसिस ऑफ द करंट एक्सप्लेनेशन जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है. तो ऐसे 25 से 150 लोगों के बीच जो सेल्फ सफिशिएंट होते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, छोटा ग्रुप होता था और उनका सोशल रिलेशनशिप होता था आमने सामने का, और यूजुअली इगैलिटेरियन होते थे. इगैलिटेरियन मींस the group of people who believe in equality for everyone. हाँ, इगैलिटेरियन हुआ करते थे, सब समानता का व्यवहार हुआ करता था. Then that is the band. Thereafter, behavioral ecology, the study of behavior from ecology and evolutionary perspective, that is behavioral ecology. If we talk about the Anthropocene, then refers to the geological epoch defined by the substantial human influence over the ecosystem, that is Anthropocene. So currently the Anthropocene has risen a lot. जैसे substantial human influence has happened over the current over the surrounding in which we are living in the ecosystem. अभी देखने को मिल रहा है, and that phenomena is referred to as Anthropocene. Geological epoch means basically time के टर्म में यूज होता है, ठीक है, ड्यूरेशन और टाइम के टर्म में. तो ऐसा समय जब ह्यूमन इन्फ्लुएंस इकोसिस्टम पर अपना इन्फ्लुएंस डालता है, उसे एंथ्रोपोसीन बोलते हैं. एंथ्रो बेसिकली मींस रिलेटेड टू ह्यूमंस. Anthropoid, a primate superfamily that includes monkey, apes, and humans, that is known as anthropoid. So these are the terms. Like there is another term, adaptation, the development of trait that plays a functional role in the ability of life form to survive and reproduce. This is what the adaptation is. Adjudication, the legal process by which the individual or council with socially recognized authority intervenes in a dispute and unilaterally makes decision, that is adjudication. जब हमारे घर परिवार में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो हमारे बड़े बूढ़े या अगर हम बड़े हैं तो हमारे अपने छोटे भाइयों में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह का एक निर्णय देते हैं. that process is known as adjudication. Is it clear? Yes, sir. Thereafter affiliation, very common term, the relationship between individuals who are frequently in close association based on tolerance, even friendliness, that is affiliation. So we all somewhere have affiliation with any particular group. That affiliation is in general have certain dimensions or certain criteria to be which is criteria is in general defined or decided by the other group or the other individual. उसका एफिलिएशन बोलते हैं. क्या बोल देते हैं ना, माँ तुम तो बड़े खराब बच्चों के बीच उठ रहे बैठ रहे हो, तुम बड़े अच्छे बच्चों के बीच उठ रहे बैठ रहे हो. इन जनरल ये एफिलिएशन का ही इंडिकेशन है ना. आजकल लगता है तुम ऐसे बच्चों के बीच उठ रहे बैठ रहे हो जो ज्यादा खेलते हैं, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है. So age grades, grouping of age mates who are initiated into adulthood together. Grouping of age mates who are initiated into adulthood together. Age grades, जो लोग एक ही साथ पले बढ़े होते हैं, बड़े पले और बढ़े होते हैं, उनको एज ग्रेड्स बोला जाता है. ग्रुपिंग ऑफ एज मेट्स who are initiated into adulthood together. So this term you can use in anywhere while you are writing, while you are speaking. So this will upgrade somewhere your understanding to explain any particular phenomena or situation or transaction. Alluvial soil, we all know that somewhere it is the part of archaeology. That is why this term alluvial soil has been incorporated in the list of terms. Thereafter, altruism, seemingly selfless act that have net loss of energy to the actor, but the net gain in energy to the receiver.
That is altruism. The act altruism in general, in dictionary, you will be finding the act of selflessness. That is altruistic behavior or altruist. It's the characteristic of person who have that nature. Thereafter, analogous, similar in appearance or function, not same due to shared ancestry. Analogous, similar in appearance or function, not the same due to shared ancestry. Analogous means ancestry shared हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी appearance और function में similarity है. That is analogous. And the term you must be finding in your logical reasoning also. Analogy पढ़ते हैं ना? Yes, sir. अब एनालॉजी में आपने ये देखा होगा कि वहां पर जो आप दो पर्टिकुलर सेट्स हैं, उन सेट्स के बीच में एक कॉमन फंक्शन को आप आइडेंटिफाई करते हो और तब उनके बीच में लॉजिक आप क्रिएट करते हो ना? Right. Thereafter, animal husbandry, breeding, care or use of domesticated herd animals such as cattle, camels, goats, horse, llamas, reindeers and yaks. This breeding and care and use of domesticated animals is known as animal husbandry. Animism, the belief that inanimate objects such as trees, rocks, cliffs, hills and rivers were animated by spiritual forces or beings. होता है ना, हमारे बिलीफ सिस्टम में, हमारे फेथ में हम लोग पेड़ों की भी पूजा करते हैं, हम लोग पत्थरों की भी पूजा करते हैं, and this particular belief system is known as animism. एनिमेशन इसी से बना है. एनिमेशन टर्म जो है वो इसी से बना है, या ये कहिए कि एनिमिज्म एनिमेशन से या एनिमिज्म एनिमेशन से, वो इधर वे यू कैन से. So thereafter, Anthropocene landscape, a landscape modified human actions in the past and present, that is an anthropogenic landscape. Anthropoid, anthropological linguistics, the branch of anthropology that studies human beings through their languages. Anthropology, we understand that. Anthropology of development, the field of the study within anthropology concerned with the understanding of cultural conditions for proper development, or alternatively the negative impact of development projects. That is anthropology of development. Like for example, कोई डैम बनाया गया या कोई पावर प्लांट बनाया गया, it may be thermal power plant, it may be nuclear power plant. So that's the anthropology of development, carrying several dimensions and gamuts of intervention of different technologies or the policies. That is anthropology of development. Then anthropometry, measurement of body parameters that assess physical variations and the relative contribution of particular body part to overall body shape. That is anthropometry. जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम monkey, apes, orangutan और बाकी chimpanzees का अगर हम स्टडी करें तो उनके बहुत सारी चीजों को अगर हम उनके physical variations की जब स्टडी करते हैं तो that study, even if we keep human in that particular sense, so then that measurement of the body parameters comes under the anthropometry. So we can talk about somewhere in that there is anthropometric difference between male and female physique. आदमी और औरत के जो फिजिक है उसके बीच में जो फिजिक में जो डिफरेंस है उसको हम एंथ्रोपोमेट्रिक डिफरेंसेस बोल सकते हैं. Then applied anthropology, appropriation, process of taking possession of an object, idea or relationship is called appropriation. Like our culture in which we used to wear different kinds of clothes, and now we have started appropriating the clothes or the attires from the different culture, and several other cultures have started appropriating the attires or the food of our culture. Then that process is known as appropriation. Clear? So this is a list that you can
just go through, and you will be able to get the terminology or the words which will be very much useful for your writing, for your expressing something which is which you feel need to be expressed when asked. सर ये पीडीएफ ड्राइव पर है? ये अरे एक्चुअली हम भूल जाते हैं। हाँ, आज अभी थोड़ी देर बाद प्लीज पिंग कीजिएगा, हम ये ड्राइव पर आपको अवेलेबल कराएंगे। सर वो रिलीजन वाला हाँ, रिलीजन वाला भी नहीं हम अपलोड करा पाए हैं अनफॉर्चुनेटली। जब खुशी शायद तुम्हारा मैसेज भी आया था हमारे पास, हमने बोला अभी कराते हैं और वो अभी तक भी हमारे से कैसे भी बस अभी कराते हैं इसको, अभी ना हमें पिंग कर दीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी logical and very comprehensive list, which will help you, which will give you an edge in understanding, by understanding these all terms and the concepts. Like city, what is city? How will you define a city? A relatively large and permanent settlement, usually with a population of at least several thousand inhabitants, is city. एक परमानेंट बड़ा सेटलमेंट जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, वो बहुत, that is city. City state, a autonomous political entity that consists of city and its surrounding countryside. जैसे Delhi is a city state, an autonomous political entity that consisted of a city and its surrounding countryside. मतलब उसमें गांव भी एग्जिस्ट करते हैं, आसपास गांव भी है, बीच में भी गांव है, और एक शहर भी। Thereafter, clan, a group of relatives who claim to be descended from a single ancestor. Clan, जैसे हमारे लाइनेज में जो हमारे दादा, उनके भी दादा, फिर उनके भी दादा, that particular group of, और उसके बाद फिर हमारे चचा ताऊ, है ना, वो सारे group of relatives who claim to be descended from a single ancestor. That is clan. Clinical variation, clinal variation, cognate words, collapse, colonialism, the historical practice of more powerful countries claiming possession of less powerful ones is known as colonialism. What is colonialism? The historical practice of more powerful countries claiming possession of less powerful ones is known as colonialism. Colony से बना है। Commodities, mass-produced and impersonal goods with no meaning or history apart from themselves. That is commodities. Commodity money, money that has another value beyond itself, such as gold, which can be used as jewelry. That is commodity money. मतलब आप सोने को किसी को दोगे तो वो पैसे की तरह से उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपको चीज दे देगा। Is it so or not? Yes sir. मान लीजिए आप कहीं पर गए, आप 50-200 किलोमीटर दूर गए और आपके पास आपका पर्स किसी वजह से गायब हो गया और आपकी गाड़ी में से पेट्रोल खत्म हो गया है और आपने पेट्रोल भरवाने की जरूरत है और आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो? लेकिन आपके पास आपका मोबाइल है, आपके और अदर आर्टिकल्स हैं। देन व्हाट यू कैन डू? You can use your mobile, you can hypothecate that mobile, or you can hypothecate any other article that particular article will considered as a commodity money. ठीक है, मतलब जिसको एक्सेप्ट कर ले और उसके बदले में वो आपको कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज अवेलेबल करा दे। Sir, is this term related to barter system? That is a kind of barter system, but that is not that much prevalent. Okay. Complex society, constructivist approach. These are the terms. So list of terms, you will be finding a very clear idea, and just in a one go you will be able to understand simply. आपको बहुत ज्यादा एक स्लॉगिंग नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए. You will not put a number of hours or much hard work against reading these all terms. Simply just a casual cursory glance will, अगर आप इन सब के ऊपर डाल दोगे, then again these terms will be sufficient. Thereafter, I will come back to this content. So, asking about European places and cities. So
Industrialized and disrupted American and European societies by bringing large number of rural people into towns and cities to work in the factories. Industrialization से यही तो हुआ है. अगर हम दिल्ली के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया को देखते हैं तो बहुत सारे लोग गांवों से, है ना, रूरल एरिया से शहरों में आए, शहरों में आकर के वहां पर काम करना शुरू किया सिटीज में, और वहां पर कई तरह का डिसरप्शन हुआ जिसके लिए फिर प्रोसेस जनरेट किया गया, दैट में बी द अर्बनाइजेशन. द कल्चर अल्टीमेटली asking about how European villages and cities were organized and how they perpetuated their culture ultimately led to questions about how all sort of non-Western societies worked as well. Perpetuation means asking about how European villages and cities were organized and how they perpetuated their cultures ultimately. Perpetuated means continue. Perpetual, continuous. How they perpetuated their culture ultimately led to questions about how all sort of non-Western societies worked as well. A second key influence on the development of anthropology was the rise of evolutionary theory to explain the biological variation among and within species. Species के बीच में biological variations देखने को मिलते हैं भी कुछ races की अगर बात करो तो they are considered to be rather अगर आप point of view से आप देखोगे they are considered to be little bigger in stature, while certain other races are considered to be of different stature or these anthropometric differences are somewhere gives an impression or somewhere gives an scope to understand the biology or to investigate the biological differences. So, contrary to thereafter, the second key influence is the biological variation. Evolution refers to the adaptive changes organisms make across generations. What is evolution? ये एक बड़ा important line है. I'm going to highlight this. Evolution क्या होता है? इसको देख लीजिए formally. Evolution refers to the adaptive changes organisms make across generations. That is evolution. Adaptive changes organism make across generation. जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो ह्यूमन और एनिमल्स उनके लंग्स अफेक्टेड होंगे नहीं होंगे? यस सर. और अगर वो लंग्स अफेक्टेड होंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर वो अडेप्टिव चेंज ऑर्गेनिज्म वक्त के साथ 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, इट मे बी पॉसिबल द साइज ऑफ लंग मे बिकम बिगर, बड़ा हो सकता है. सो दैट दिस अडेप्टेशन, this biological adaptation may make humans fit to fight or to adapt or to adjust to the environmental changes. It may be possible that there are two lungs. Over a period of time, our genetic code may start producing another lung, third lung. That is the evolution. Evolution refers to the adaptive changes organisms make across generations. इसी तरह से across species, plants, trees, and other organisms or animals. This is what the evolution is. Clear? Yes sir. Contrary to popular perception, Charles Darwin did not discover evolution. He contributed to the mechanism of natural selection to explain evolutionary changes. There are two big theories proposed by two big scholars or the philosophers. One was the Lamarck and another was the Darwinism. Darwin. सुना है नाम? Yes sir. अस्तित्व सुना है Lamarck का? Charles Darwin's theory of जो origin of species है, जो अस्तित्व कहाँ हो? Are you there, अस्तित्व? Yes sir. Lamarckism and Darwinism. Lamarck and Darwin दोनों का नाम सुना है? No sir.
डार्विन और लेमार्क का नाम नहीं सुना तुमने? बायोलॉजी में 10वीं में थोड़ा बहुत तो कहीं पढ़ा होगा। सर 10th में, हाँ इतना कुछ नहीं सर, नहीं सुना। खुशी बताओ, तुमने पढ़ा है तो थोड़ा सा। यस सर, डार्विनिज्म की मतलब चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कि मतलब जो एडेप्टेशन पे डिपेंड है वो। हाँ एग्जैक्टली, कि मतलब सिर्फ वही अभी एक्सटेंट वही लोग नहीं हुए हैं, वही ऑर्गेनिजम्स नहीं हुए हैं जो अडेप्ट नहीं कर पाए, जो अडेप्ट कर पाए। और लेमार्किज्म सर उसके बारे में नहीं पता। सुन लीजिए, अभी एक उनका एक कंसेप्ट था जो उनकी स्टडी थी, उसमें ये बोला कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है। क्यों? उन्होंने ये देखा कि वो जिराफ जो एनिमल है वो एक ऐसे एरिया में पैदा हुआ, बढ़ा, जहां पर उसको खाने के लिए जो उसका जो पेड़ों के पत्ते थे वो बहुत ऊंचाई पर होते थे, तो उसको अपनी गर्दन जो है वो ऊंची करनी पड़ती थी। धीरे धीरे जब जब गर्दन उसको और ज्यादा ऊंची करके उसको वो पत्ते खाने पड़ते थे, तो इन दैट इज वाई जो जिराफ की गर्दन गर्दन है वो लंबी होती चली गई। दैट वाज द theory proposed by Lamarckism that was later rejected by several evolutionary theorists, and that was again rejected by or had a certain reservation, and the other theory was proposed by the Darwin. तो ऐसा तो ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति को आप लटक उसको बोलते हैं ना कि अगर आप लटकोगे तो आप लंबे हो गए। yes. कहीं इससे ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, सिर्फ डीएनए में तो चेंज आएगा नहीं ऐसे। हाँ, है ना। तो ये एक तरह से लेमार्क का एक वेरिएंट आप मान लो, जो सोसाइटी में कल्चर के फॉर्म में ये आप देखने को मिलता है। ठीक है। सो these few concepts will help us or will help you to understand the formally, and in coming few classes I will be discussing few more concepts. So today that much is sufficient. You just I can move a little faster, but somewhere it will kill the जो हमें समझने के लिए चीजों को थोड़ी सी, या इनिशियली जो चीजों को समझने के लिए हमें जरूरत है वो फिर रह जाएगी। ठीक है ना। आई विल ट्राई टू पुट दैट इन लेसर नंबर ऑफ वर्ड्स, ये आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा, एंड आई विल कीप वन मोर क्लास or two more class related to anthropology. Okay sir. So then good day to all of you. See you in next class. I had one question. बोलो। सर ऐसे मुझे पब्लिक पॉलिसी पढ़ना है, तो सर कोई ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे मैं अपडेट रह सकती हूँ, जैसे न्यूज़पेपर्स में होता है बट पूरा अच्छे से नॉलेज वाला, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड दो एस्पेक्ट हैं, एक नेशनल एंड एक इंटरनेशनल। मैं आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, आप उन्हें पढ़िए, कुछ एक वर्क्स है, ठीक है, रिसर्च वर्क्स है। और पब्लिक पॉलिसी आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाकर के वहां पर जो उनके टीचर्स हैं उन लोगों के अपने रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनके सर्वेज होते हैं, वो वहां पर पोस्टेड रहते हैं। ओके। आप आईआईटी की पब्लिक पॉलिसी के डिपार्टमेंट पर जाकर के देखिए कि वहां के प्रोफेसर्स किस तरह के रिसर्च कर रहे हैं, है ना। दैट विल हेल्प यू। ओके सर। ऐसी तरह से अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी एटिस है, वहां पर भी उनके प्रोफेसर्स के अपने रिसर्च पड़े रहते हैं, लेटेस्ट क्या कर रहे हैं वो भी पढ़ा रहता है। ओके सर। वो कीजिए। थैंक यू सर।